MS मॉडल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th मैथ्स वीडियो 1 आपके सामने है। उम्मीद है सभी बच्चे ध्यान से इसे पढ़ेंगे और अपना काम करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम जस्ट लाइक फैमिली ऑफ नंबर्स। जिस तरह से किसी परिवार में हम देखते हैं अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग नाम हैं, ठीक उसी तरह अलग अलग तरह के नंबर्स के अलग अलग नाम हमने रखे हुए हैं। सो फैमिली ऑफ नंबर्स को हम बोलें नंबर सिस्टम्स। अब इसमें कौन कौन से नाम हैं वो हमें बेहद सावधानी से पढ़ने होंगे, लर्न करना होगा, और यदि हम इनको ढंग से लर्न कर पाए तो एक्सरसाइज आसानी से आप कर पाएंगे। क्लास 6th में आपने इंटीजर्स की शुरुआत की थी। 5th तक आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स पढ़ते थे। 6th क्लास में पहला इंट्रोडक्शन हमारे पास आया था नंबर लाइन का। नंबर लाइन में हम देखते थे, ये फिगर आप देख रहे हैं, मैंने नंबर लाइन एडवांस में ड्रॉ की हुई है। नंबर लाइन दोनों साइड्स में इंडेफिनेट डायरेक्शंस में एक्सटेंड हो सकती है। इसमें 0 से 2 साइड बनी, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड की ओर हम पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव साइड की ओर नेगेटिव नंबर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस नंबर लाइन पे अब हम इनका अलग अलग डिवीजन देखेंगे। अलग अलग नंबर्स के नाम हम क्या दे रहे हैं। शुरुआत में सबसे पहले क्लास 1st से 5th तक हम पढ़ना शुरू कर रहे थे नेचुरल नंबर्स। ऑलमोस्ट इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स में जैसा आप देख रहे हैं मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं। इन काउंटिंग नंबर्स में हम देखेंगे कि हमारे पास 0 हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इनमें हमारे पास नंबर 1 है, 2 है, 3, 4 एंड सो ऑन। आगे तक बढ़ते चले जाइए। वी कैन नॉट राइट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका भी सक्सेसर होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर is 1 and we cannot write largest number, remember it. नेक्स्ट स्टेप, और साथ में ये कि हम नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को कैपिटल N से शो करेंगे। जब कभी हम कैपिटल N लिखें मैथ्स में तो उसका मतलब है नेचुरल नंबर्स, और हमें समझना होगा कि ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं उसकी फैमिली को हम N से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप आता है होल नंबर्स का। काउंटिंग नंबर्स में मैथ्स जैसे जैसे प्रोग्रेस करता चला गया तो हमें 0 की ज़रूरत पड़ी। 0 शामिल करने के बाद हमने एक नया सेट नंबर्स का दिया और अब हमारे नंबर्स इंक्रीज हो गए थे और वो 0 से इंक्रीज हुए। होल नंबर्स को हम W से, कैपिटल वर्ड W से रिप्रेजेंट करेंगे। होल नंबर्स के कलेक्शन को सिंबल W, कैपिटल याद रखिए, स्मॉल w नहीं। डेफिनेशंस सर्टेन है। अब हम यदि W देखते हैं तो ये है क्या? ये ऐसे नंबर्स का सेट है, ग्रुप है, फैमिली है जिसमें 0 भी शामिल हुआ, 1 2 3 4 एंड ऑल अदर नंबर्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक प्रश्न पुटअप किया जाएगा, आपसे क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है अक्सर। आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स? सर्टेनली यस।
क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? नो, बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, हायर लेवल और नंबर्स में हमारा आया, जैसे जैसे हमारे मैथ्स में प्रोग्रेस आगे बढ़ती रही, हमें नंबर्स की ज़रूरत और पड़ती रही। अब हमारी ज़रूरत थी इन नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स की भी। इनको नाम दिया गया इंटीजर्स। एवरी काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 and negative of natural numbers are called integers. It's a collection of whole numbers and negative numbers, negative natural numbers. इस तरह से हम नंबर लाइन पे देख रहे हैं कि अब हमारे पास बड़ी डायरेक्शन जो राइट हैंड साइड बोली गई थी, लेफ्ट हैंड साइड की ओर छोटे नंबर्स होते चले जाएंगे, यहाँ डिक्रीज होता चला जाएगा और इस तरफ से इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे। हर एक राइट साइड की ओर होने वाला इंटीजर अपने लेफ्ट साइड की ओर होने वाले इंटीजर से बड़ा रहता है, यानी -2 इज ग्रेटर देन -4। हियर 4 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज ग्रेटर देन -3। यदि हम एक कंपैरिजन यहाँ करें -2 and -4, so obviously 2 is to the right of -4, therefore -2 is greater than -4. Whether 0 is greater than -3? Yes, because 0 lies towards right of -3. नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप आता है, मैं कलेक्शन का सेट बताना भूल गया, हम इस कलेक्शन को Z से डिनोट करते हैं। Z जब हम लिखें, इट्स ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास नंबर सिस्टम में आता है रेशनल नंबर्स। यू माइट हैव सीन ए स्केल। स्केल के ऊपर हम देखते हैं कि 1 और 2 के बीच इस एरिया को स्पेसिफाई करिए। जब हम 1 और 2 में आते हैं तो यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, जिस तरह से स्केल के ऊपर छोटे छोटे से आप देखते हैं डिवीज़न होते हैं, जिसे हम mm बोल रहे हैं। 1 और 2 सेंटीमीटर्स की मार्किंग है स्केल के ऊपर, जो ज्योमेट्री में आपका स्केल है। इसको हम 1.1 रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट नंबर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, ये जो स्मॉलर नंबर्स हैं, स्मॉलर डिविजन्स जो बने हुए हैं मेन नंबर्स के बीच में, इंटीजर्स के बीच में, यहाँ पर ऐसे नंबर्स बनते हैं जो इंटीजर्स नहीं हैं। 1.1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? 5वीं 6वीं में आप इसे रेशनल नंबर्स के रूप में या फ्रैक्शंस के रूप में लिखते थे। इट इज 11/10 मीन्स यदि हम हर एक संख्या को 10-10 हिस्सों में बांट दें तो 10-10 हिस्सों में बटी हुई 11वीं संख्या है। यहाँ से यहाँ तक 10 गिनती हो जाएगी और फिर ये 11वीं जो स्थिति है वो 1.1 रिप्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स काफ़ी वाइड सा स्कोप है।
बहुत सारे बच्चे इसे कम समझ पाते हैं। इस ग्रुप को हम कैपिटल क्यू से दिखाते हैं, सेट भी कहते हैं हम। हायर क्लासेस में 11th में हम जाएंगे, सो क्यू विल बी ए सेट। अभी तक हम इसे फैमिली कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, सेट कोई बच्चा याद रखे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यू हमारे पास है 1/2, 3/5, 7/9। हाउ टू राइट ऑल दीज नंबर्स? रेशनल नंबर की डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो number r, this is certain number, r is called rational number if it can be written in form of p upon q. What is this form p upon q? If p and q are integers, fix a number integer here. Suppose I write -2 here because -2 belongs to integers, and I write 5 here. So I can write a rational number. There is a condition that these p and q should be integers from the family of integers, and q should not be equal to 0. Why do we insist that q should not be equal to 0? Because division by 0 is not defined. We cannot divide anything into zeros. What is meaning of division by 0? मान लीजिए मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं, मैं उनमें से 0 पेंसिल्स के ग्रुप बनाना चाहूँ, तो 10 पेंसिल में से मैं 0 पेंसिल उठाता हूँ, मीन्स मैंने कोई पेंसिल उठाई नहीं और मैं ग्रुप बना देता हूँ। तो आई कैन फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स टेकिंग 0 एट ए टाइम। यदि हम देखें यहाँ हल्का फुल्का सा 0 डिवीजन दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमें 5 को 0 से डिवाइड करना है। क्या 0 की टेबल आपको आती है? मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। 0 1 जा 0, 0 2 जा is always equal to 0, again 0 3 जा is 0. So you can write any number here. Let's write 7. So 0 7 जा again 0. ये 5 आपका चलता रहेगा। अब 0 की टेबल में 9 पे ले जाऊं तो 0 9 जा 0, again 5 is remainder. I can take any number here. So this number will be infinitely large. Infinitely large का मतलब I can't write this number because largest number is not possible. So division by 0 is not defined. So this number, particularly this q, should not be equal to 0. Can this p is 0? Yes. p 0 हो सकता है। यदि मैं लिखता हूँ 0/7, it's a rational number. यदि मैं लिखता हूँ 13/0, it's not a rational number. As division by 0 is not defined, there is a restriction here that denominator should not be equal to 0. So remember, once again recite this statement. A number r is called a rational number, or a rational number can be written in form of p upon q, where p and q are integers and q should not be equal to 0. ये कंडीशन आपने याद रखनी है। How to write a rational number? Let's try once more. What is this form p upon q? हमें माइंड में दो बातें सेट करके रखनी पड़ेंगी। p and q are integers, so write any two integers. -11, I can write 7, I can write -7 as well. So this -11/7 is a rational number. Remember, this denominator should not be equal to 0. ये 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी स्थिति है, न्यूमरेटर छोटा है, बड़ा है, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं,
इनमें से एक नेगेटिव है, कोई अंतर इसमें नहीं होता। बाद में हम देखेंगे कि कौन से रेशनल नंबर्स नेगेटिव हैं, कौन से पॉजिटिव हैं। अब मेरे पास एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के कुछ। एग्जाम्पल 1 में आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। लेट्स टेक वन बाय वन। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। रिमाइंड, नेचुरल नंबर्स का सेट हमारे पास था 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स का सेट आपके पास क्या था? रिमाइंड करते रहिए साथ साथ। आई हैव रिटन इट इन फॉर्म ऑफ W। होल नंबर्स start from 0, 1, 2, 3, 4. Here, every whole number is a natural number. Certainly, this 0 is absent here. 0 is not a natural number. If 0 is not a natural number, then every whole number is not a natural number. So, obviously, this statement is false. यदि इसका कन्वर्स यहाँ लिखा जाता, मान लीजिए हम नेचुरल नंबर्स की जगह होल नंबर्स लिख देते, होल नंबर्स की जगह नेचुरल नंबर्स लिख देते, तो यदि हम नेचुरल नंबर्स के सेट में से चेक करें, वेदर दिस 1 इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर, यस, वेदर दिस 2 इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर, यस, वेदर दिस 3 इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर, यस, एंड ऑब्वियसली ऑल these natural numbers are included in whole numbers. So if I change this whole number from natural number and natural number to whole number, then this statement will be true. I'm taking next. Every integer is a rational number. Every integer is a rational number. Remember, integers की statement को थोड़ा सा रिमाइंड करिए। हमारा सेट था Z, Z हमने डिनोट किया था, और Z हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड से भी एक्सटेंडेड था, -4 से हमने रिप्रेजेंट किया था, -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Every integer is a rational number. What were rational numbers? Rational numbers हमारे पास सेट Q था, ये थे P upon Q फॉर्म में, where P and Q are integers, where P and Q are integers, and there was a special condition. Do you know? Yes, there is Q should not be equal to 0. So can I write this -2 in form of P upon Q? Obviously yes. If yes, then -2 can be written as -2/1. Is there some other way? Yes, -2 can be written in form of -4/2. So this is a form of rational number. So every integer can be written in form of rational numbers. So obviously this statement is true. Zero can also be represented as a rational number. If there is any doubt in your mind that we cannot write 0 in rational number, you can write 0 upon 1. Here 0 is P
and 1 is q. Or you can write any other integer here. So obviously 0 is a rational number as well. Let's come to third. Every rational number is an integer. Every rational number. Recall rational numbers. I have divided this number line into smaller parts. Here is 0, 1, 2. I have divided this into 10 smaller parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So this number is 1.1. Can we write 1.1 as integers? No. It is 11 upon 10. So every rational number cannot be integer. Sum of rational numbers, just I am taking a case of 15 by 5. This rational number can be written in form of integer, but not every rational number. हर एक रेशनल नंबर को हम इंटीजर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. और हमारी स्टेटमेंट एक बार दोबारा से रीचेक करिए क्या थी. एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर. वी फाउंड इट फॉल्स. हमने ये गलत पाया. सो यू हैव टू चेक योरसेल्फ. इफ यू हैव नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम एंड रिमेंबर इट, learn it by heart, practice each and every time you are free. Go through this lesson. You will have a mastery over number system. Let's have some more examples. Find 5 rational numbers between 1 and 2. Before I start, I am taking some more examples. Just I have talked about scale, number line. Think. There is 0, 1, 2, 3, 4, these numbers are, where is this 1 here, where is this 2 here. So there are infinite numbers, infinite points between 1 and 2. Remember, a line is a collection of infinite points. So every point denotes a number, rational number. If I can point here, it represents a rational number. This number is some other rational number. This number is some other rational number. And I can write so many. We have to find out 5 rational numbers between 1 and 2. No matter, you can find out more than 5. But minimum you have to find out 5. So what shall we do? Either divide this segment into 10 parts, 6 equal parts, 7 equal parts, 8 equal parts. You will get 5 rational numbers. How can we do it? I remember this 1 can be written as 1.0. This 2 can be written as 2.0. And now these numbers lie between 1.0 and 2.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, and so on.
we can write more numbers. Had there been 7 numbers, I can write it as 1.6 and 1.7 as well. No matter which number should you write. इसमें ये कोई स्थिति नहीं है कि हमने एग्जैक्टली बीच के नंबर पूछे हैं, जस्ट उनकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए। सो इस नंबर लाइन के ऊपर हमें वो नंबर्स छांटने हैं। 2-3 मेथड्स हम यूज करते हैं, तो ज़्यादा जनरल हैं। पहला, यहाँ एक बात देखने योग्य और भी है कि अभी डेसिमल सिस्टम में हमने अपने नंबर को नहीं रिप्रेजेंट किया है। तो ये डेसिमल नंबर्स रेशनल नंबर्स में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। दिस इज 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 and 15/10. Do not forget to express them in lowest term. पिछली क्लासेस में आपको लोवेस्ट टर्म में ये एक्सप्रेस करने आते हैं। 2 6 जा, 2 5 जा, 2 यहाँ भी कॉमन फैक्टर है, 2 7 जा, 2 5 जा, 5 2 जा, 5 3 जा। So obviously I have these 5 numbers: 11/10, 6/5, 13/10, 7/5 and 3/2. What is another method? Another method is, मान लीजिए मुझे 6 और 10 के बीच में कोई संख्या निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं उनका। 6 और 8 को ऐड करते हैं, 6 और 8 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। If I have to find out a number between 6 and 8, then I have to find out its arithmetic mean. Arithmetic mean आपके पास क्या था? Sum of all observations divided by number of observations. So मेरे पास नंबर 2 हैं, उनका मीन यदि मैं निकालना चाहूँ तो दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया, इट विल बी 7. So 7 lies between 6 and 8. यदि हम 6 और 8 के बीच में एक संख्या निकाल सकते हैं, तो 6 और 8 के बीच में हम और बाकी संख्याएं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद में 6 और 7 के बीच में भी कुछ रेशनल नंबर्स निकाल लूँगा। सो हमारा एक मेथड आता है, मैं उस मेथड में डीप बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा सिर्फ। जैसे मैंने पहले नंबर लाइन पे बताया था, there are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers. नंबर लाइन के ऊपर यदि हम यहाँ आते तो 1 और 2 के बीच में यहाँ हमने 4 रेशनल नंबर्स मार्क किए हुए हैं। आई कैन मार्क 8 एज वेल। इन दोनों के बीच में मैं एक नंबर और रिप्रेजेंट कर सकता था, इन दोनों के बीच एक और इस तरह से हमारे ये रेशनल नंबर्स फिर 8 हो जाते। क्योंकि पॉइंट का कोई साइज नहीं होता, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी हम बहुत सारे और दूसरे पॉइंट्स भी मार्क कर सकते थे। सो जिस कारण से 1 और 2 के बीच में हम इनफाइनाइट पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं, उसी तरह से हम 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं, रेशनल नंबर्स। किसी भी दो संख्याओं के बीच में कितनी भी संख्या के रेशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं, ये फैक्ट है। रिमेंबर इट बाय हार्ट। लेट्स सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स टेक इट one by one. This is exercise. Your first question is 0 a rational number? Can you write it in form of P upon Q?
0 is a rational number. Remember your fact. नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आए थे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 and so on. Is 0 a rational number? यदि यहाँ रेशनल नंबर की जगह पूछा जाता नेचुरल नंबर, तो ध्यान दें 0 नेचुरल नंबर में शामिल नहीं था, होल नंबर्स में शामिल था। अब हमने आगे पढ़ा था कि सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं। मैंने पिछले एक प्रॉब्लम में यही डिस्कस किया था कि 0 को हमने रेशनल नंबर के रूप में लिखा था 0/1. So it can be represented in form of P/Q. And your definition for rational number is any number that can be written in form of P/Q where P and Q are integers and Q should not be equal to 0. So obviously 0 is a rational number. Can you write it in form of P/Q? I have written it. You can write 0/2 as well. अभी भी ये P/Q फॉर्म में है। यदि हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन वी विल गेट 0. So no matter what will be the value of Q, it should not be equal to 0. Where P and Q are integers and Q is not equal to 0, you can express. So obviously 0 is a rational number. We can write it in form of P/Q where P and Q are integers and Q should not be equal to 0. Let's take next problem. Find 6 rational numbers between 3 and 4. नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये आपका एरिया है जिसमें आपने कुछ रेशनल नंबर्स निकालने हैं। सो पहली प्रैक्टिस तो आप इसे 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 कुछ इस तरह की स्थिति डेसिमल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 and 3.6. Now express these decimal numbers in form of rational numbers. 31/10, 32/10, and in next step you can change them in lowest term. What's the other method? Other method is first rational number. First rational number between 3 and 4. हमने क्या प्रैक्टिस अपनाई थी? 3 और 4 को ऐड किया था और इसका हाफ किया था. So your answer will be 7/2. Now we have 3 numbers here. अब हमारे पास यहाँ 3 नंबर हैं. 3, 7/2, 4/1 और 4. I can find out one more number here. सेकेंड रेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड रेशनल नंबर आपका होगा हाफ ऑफ 3/1 plus 7/2. So add them. It will be 13/2. Take LCM. While add. Multiplied by 1/2. So 13/4. What will be the third number? I have to find out a number here.
What should you do? Add them. 7 by 2 plus 4 by 1 and multiply it by 1 by 2. You will get third rational number. थर्ड रेशनल नंबर ओरली आप क्या बता सकते हैं कितना आएगा? तो यहाँ 4 कर दीजिए, 4 टू जा 8 हो जाएगा एंड इट विल बिकम 15 by 4. अब आपकी जो ये सीरीज है ऊपर, उसमें 3 नंबर हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, 3/1 एंड 7/2 के बीच हमने निकाला था 13 by 4. We have found 3 rational numbers. How many numbers are required? 6. So I have to do one more practice here. Follow same method. Another here and another here. The required number will be 6. So I can insert any number of rational numbers between any given 2 rational numbers or natural numbers, whole numbers or integer. Can you find out? If yes, do it. If no, then I can solve it for you. You can place any message to me on my phone number. You might have my contact number. Find 5 rational numbers. I am taking third question. Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. It's very easy to find out rational numbers between like rational numbers. What are like? Here I am taking 2 boxes. One number is 3/5 and other number is 4/5. Right now there is no number between 3 and 4, no natural number between 3 and 4. So there are 2 to 3 possible ways. I have to change these rational numbers into equivalent rational numbers so that I can find out numbers between 3 and 4. How can I take equivalent rational numbers? Change this number by multiplying numerator and denominator by a suitable number. What will be your suitable number? If I have to find out 5 rational numbers, I will multiply this 3 and 4 by 6. Why by 6? Not by 3. Let's check. मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. यहाँ हमारे पास 9 आता है, यहाँ 12 आता है. I can insert only 2 numbers, means less than 3, 1 less than 3. If I am taking this multiple as 6, let's multiply 3 by 6 and 4 by 6. It will be 18, it will be 24. And how many numbers are there? Now I have 19, 20, 21, 22, 23, between 18 and 24. So I have to get 5 numbers. So if I multiply the denominator, which is same in this case, by 6,
I can get 5 rational numbers between 3 and 4. So let's try. This 5 gives you an idea that we have to multiply it by 6. So multiply numerator and denominator by 6. 3 multiplied by 6 upon 5 multiplied by 6. The box remains the same. What will be the next number? 4 multiplied by 6 upon 5 multiplied by 6. Obviously, this number can be written in form of 18 upon 30. And this number can be written in form of 24 upon 30. Now check how many numbers lie between 18 and 24. So required rational numbers are 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30 and 23 upon 30. हमें 5 नंबर निकालने के लिए आदेश था और 5 नंबर अब आप निकाल चुके हैं। जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि कोई 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहे और हम निकाल दें 8, तो उन 8 में से कोई 5 आप लिख लीजिए। कैसे? अभी मेरे पास था 3 upon 5 and 4 upon 5. I can multiply these numerator and denominator by 10. It will become more easier. So these rational numbers can be written as 30 upon 50 and 4 upon 5 can be written as 40 upon 50. So you are free to choose any number between 30 and 40. That is 31 upon 50, 32 upon 50, 33 upon 50, 34 upon 50 and 35 upon 50. No need to write more numbers, as we have to find out only 5 rational numbers as per question. So don't forget to cancel common factor. Write them in standard form. Again, this can be written as 31 upon 50, cancel 2, 16 upon 25, next, no cancellation, 33 upon 50 remains the same, cancel out 2, 17 upon 25, and cancel out 5 from here. 5 7 the 5 10 the 7 by 10. Can you see these numbers are different from these numbers? So no need to worry what is the answer in your books. You can find out other numbers. So let's take next example. There are some statements. State whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. Every natural number is a whole number. पहले हमने फर्स्ट अर्लियर क्वेश्चंस में ऐसा पढ़ा था, उसमें स्टेटमेंट दी थी वेदर एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो वहाँ हमने फॉल्स पाया था।
नेचुरल नंबर हमारा क्या थे? नेचुरल नंबर का सेट था हमारे पास 1 2 3 4। होल नंबर्स का सेट क्या था? कैपिटल W 0 1 2 3 4 and so on. I have to check whether all these numbers belongs to whole numbers, and certainly yes, all these numbers are included in whole numbers. So this is true. Every integer is a whole number. Every integer is a whole number. W हमारे पास था, Z सेट हमारे पास था -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 and so on. Every integer is a whole number. So I think -4 is not here in whole numbers. So this statement is false. Every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. Let's try out some P upon Q forms where Q is not equal to 0. Let's I take -15 upon -5 first. So cancel out 5 1 ja 5 3 ja. Some of the rational numbers may be whole numbers. But is it true for all rational numbers? Let's take one more example, P upon Q form. Let's take P as 7 and Q as 2. So this number cannot be represented as whole numbers, as it comes out to be 3.5, which lies between 3 and 4. So this is a whole number, this is a whole number, but this is not a whole number. So this statement, again, every rational number is a whole number. False. This is end of the lesson today. और स्टूडेंट्स अभी लॉकडाउन है, कोरोना वायरस से आप और आपका परिवार काफ़ी चिंतित है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, हैंड वॉशिंग, सभी चीज़ों का प्रयोग करिए। कीप योर सेल्फ एंड योर फैमिली सेफ। और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी पेरेंट्स इस वीडियो को साथ देखें। एक्चुअली मैंने बच्चों को पढ़ाने के लेवल पे, बच्चे बहुत सारी बातें इसमें से पहले से जानते हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं पेरेंट्स को भी पढ़ाऊँ ताकि आप साथ बैठ के अपने बच्चे की मदद कर पाएँ। मुझे मालूम है छुट्टी होते हुए, स्कूल न लगते हुए बच्चों का पढ़ाई का मन बहुत कम करता है। मैं ये वीडियो 45 से 50 मिनट का बना रहा हूँ, लेकिन इसे बनाते हुए मुझे 4 से 5 घंटे लगते हैं। मुझे ये सभी तैयारी करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है और आपके सामने ये बैठ के वीडियो बनानी पड़ती है। फिर इस वीडियो को कन्वर्ट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। 2 वीडियो बनाने के लिए आई हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स। और यदि मैं आपके लिए 8 से 10 घंटे व्यतीत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज है कि आप बैठ के कम से कम 15-20 मिनट इसे तेज करके भी आप देख सकते हैं। वीडियो को फास्ट मोड पे देख सकते हैं। यदि इतना टाइम आपके पास नहीं है, पार्शियल आप देख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ डेटा यूज करना है आपको।
और वो डेटा तो ऑलमोस्ट आपके पेरेंट्स आपको पहले से प्रोवाइड करवा रहे हैं। 9th क्लास नई क्लास है, अब सेकेंडरी लेवल हो जाएगा। 8th क्लास से लेवल काफ़ी ऊंचा चला जाएगा, और ऐसा बताते हैं कि 9th और 11th में मैथ्स कुछ मुश्किल हो जाता है। सो शुरुआत से इन दिनों को वेस्ट ना करें, बहुत बढ़िया तरह से इन लेक्चर्स को देखिए, वीडियोस को देखिए। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि मैंने बेस्ट वीडियो दे दिया, मेरे से एक्सपर्ट और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप फेशियल एक्सप्रेशन से, आवाज़ से मेरे से परिचित हैं, मेरी पढ़ाई की शैली से परिचित हैं। सो हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद आए। पसंद नापसंद यदि है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको क्लियर नहीं है, मेरे नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं, स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख के यदि कोई ऐसी स्थितियां हैं, बच्चों को समझ में कम आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो स्लो या फास्ट करूँगा। कुछों को दिक्कत हो सकती है कि मुझे तेज़ पढ़ना था, कुछों को दिक्कत हो सकती है कि तेज़ी से सर ने पढ़ा दिया, मुझे कम समझ आया। सो मुझे एक मीडियम रेंज लेके चलनी पड़ती है, कमज़ोर बच्चे के लिए भी। हो सकता है आप पहली बार ये पढ़ रहे हों, आपके लिए भी, पेरेंट्स भी इसे पढ़ें। मैं इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज में ये वीडियो बनाया जा रहा है। स्कूल की पढ़ाई और वीडियो में पढ़ाई का कुछ डिफरेंस है। अभी मैं घर बैठा हूँ, अकेला हूँ, बच्चों के सामने बोलना अलग है, अकेले में बोल के ये वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल सा लगता है। और मैं भी ये टेक्निक सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने की है, और कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठ के वीडियोस बनाना बड़ा अजीब सा लगता है। और एकांत भी काफ़ी, आप भी जानते हैं लॉकडाउन में आपकी क्या स्थिति है। घर से बाहर निकलना मैं भी नहीं चाह रहा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं खुद सुरक्षित रहूँ और आप भी सुरक्षित रहें। सो उम्मीद है स्कूल में आपसे मिलेंगे जल्दी, और तब तक मैं हर रोज़ एक वीडियो आपके लिए पोस्ट करता रहूँगा। स्टे सेफ, स्टे इन टच। Thank you very much for watching this video.